Welcome to another session of solving high-yield pharmacology MCQs with me, Dr. Maryam, Assistant Professor of Pharmacology. Our first statement is that a 63-year-old man complained to his physician of nausea, vomiting, and a visual sensation of green-yellow halos around bright objects. The man, recently diagnosed with cardiac failure and atrial fibrillation, had started an appropriate treatment 2 weeks earlier. Which of the following drugs most likely caused the patient's symptom? A. Verapamil, B. Propranolol, C. Digoxin, D. Lidocaine, E. Furosemide. अगर हम अपने क्लूज़ को देखें तो हमारा पहला क्लू ये है कि पेशेंट को रिसेंटली कार्डियक फेलियर और एट्रियल फिब्रिलेशन के साथ डायग्नोसिस किया गया था और उसका ट्रीटमेंट भी स्टार्ट हो गया था। अब ट्रीटमेंट में कोई ना कोई ऐसी ड्रग है जो कि विजुअल सेंसेशन को डिस्टर्ब कर रही है और पेशेंट को हर ऑब्जेक्ट के इर्द गिर्द फ्लैशी ग्रीन येलो हेलोज नज़र आ रहे हैं। Amongst all the drugs we have, digoxin is the only one जो कि जब सोडियम पोटेशियम ATPase को इनहिबिट कर रही होती है तो ये इनहिबिशन सिर्फ कार्डियक सेल्स तक महदूद नहीं होती है। इट इज़ नॉट लिमिटेड टू द कार्डियक सेल्स बल्कि ये तमाम बॉडी के सेल्स इंक्लूडिंग रेटिना को भी डिस्टर्ब कर रही होती है। Whenever patient comes to you and he's a cardiac patient और उसको ग्रीन येलो हेलोज हो रहे हैं, कोई भी विजुअल डिस्टर्बेंसेस हो रही हैं, then digoxin will be surely the culprit. A 46-year-old man presented in the emergency department after a suicide attempt. He has taken more than 20 digoxin tablets, 0.25 mg each, ingesting them about 3 hours ago. His ECG shows atrial tachycardia and second-degree AV block. Which one of the following is the most important therapy to initiate in this patient? A. Diazepam, B. Digifab, C. Lidocaine, D. Phenytoin, and E. Potassium salts. Now, if we scrutinize all the options, A, which is diazepam, is simply a skeletal muscle relaxant. It has nothing to do on cardiac cells. Second is Digifab. Digifab binds to molecules of digoxin. It reduces free digoxin levels. C is lidocaine. Lidocaine is also given in digoxin toxicity, but it is useful only in suppressing ectopic ventricular pacemaker activity. Next up is phenytoin, which is an anti-epileptic. And finally, these are potassium salts. Digoxin जो है वो जाके सोडियम पोटेशियम पम्प्स को इनहिबिट करती है एंड देयर आर हाई चांसेस कि अगर डाइजॉक्सिन टॉक्सिसिटी हो रही है तो हाइपरकैलीमिया भी हुआ होगा। फर्दर पोटेशियम सॉल्ट्स देना इज नॉट एन अप्रोप्रिएट चॉइस। सो द मोस्ट अप्रोप्रिएट option, though lidocaine is present there, but it is Digifab. Whenever digoxin toxicity की बात आती है, emergency management की जब भी बात होती है, तो antibodies are the first line of management and you should remember it by heart. Our next statement is, to reduce morbidity and mortality in congestive cardiac failure, the first line agents alongside loop diuretics, which act by reducing aldosterone secretion, salt retention, and vascular resistance. We have 5 options, which are angiotensin-converting enzyme inhibitors, beta antagonists, cardiac glycosides, nitrates, and natriuretic peptide. Patient को अगर congestive cardiac failure है, loop diuretics के अलावा हम कौन से ऐसे agent दे सकते हैं जो कि first line है और फिर उस agent को बहुत अच्छे तरीके से elaborate कर दिया गया है जो कि हमें लेके जा रहे हैं हमारे आंसर की तरफ. The agent is acting by reducing aldosterone secretion, salt retention, and vascular resistance. ACEIs and beta antagonists, they both are first line drugs. Nitrates come as second line drugs, जबकि cardiac glycosides को हम avoid करते हैं because हमें पता है कि उनका therapeutic index बहुत narrow होता है. Amongst ACEIs and beta antagonists, अगर हम सिर्फ first line drugs को explore करें तो जो हमें एक explanation दी गई थी कि वो drug ultimately aldosterone secretion को reduce कर रही है, salt retention और vascular resistance को भी alter कर रही है, so that is plain and simple angiotensin converting enzyme inhibitor. Our correct answer. Next MCQ is, a patient who has been taking digoxin for several years for chronic heart failure is about to receive atropine for another condition. A common cardiac effect of digoxin, as seen on ECG that can be entirely blocked by atropine is A. Absence of P waves, B. Elevation of ST segment, C. Flattened biphasic D waves, D. Increased PR interval, and E is shorter QT interval. Now this question is not that simple. इस क्वेश्चन के लिए आपको जो ECG की चेंजेस होती हैं
by all the major cardiac problems, उनके बारे में एक साउंड इंसाइट होना बहुत ज़रूरी है। और अगर हम पर्टिकुलरली हार्ट फेलियर की बात करें तो डायजॉक्सिन से जितनी भी चेंजेस आती हैं on the ECG, you should learn them by heart. They are very important and they are very high yield. So now let's scrutinize our options. First up is absence of P waves, which occurs whenever there is atrial fibrillation. Then there is elevation of ST segment, which is a telltale sign for ST elevated myocardial infarction. Then we have flattened biphasic T waves, increased PR interval, and shorter QT interval. Three options, those that is option C, D and E, ये सारे के सारे डायजॉक्सिन के साथ होते हैं। डायजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी की वजह से नहीं हो रहे। अगर पेशेंट डायजॉक्सिन लेना स्टार्ट कर देगा तो थेरेप्यूटिक लेवल्स पे भी ये चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे। इट इज़ बिकॉज वंस यू स्टार्ट डायजॉक्सिन देयर इज शॉर्टनिंग ऑफ द एट्रियल एंड वेंट्रिकुलर रिफ्रैक्टरी पीरियड, जिसकी वजह से क्यूटी इंटरवल जो है वो शॉर्ट हो जाता है और सेकेंडरी रिपोलराइजेशन एब्नॉर्मैलिटीज़ की वजह से ST segment, T waves and U waves भी अफेक्ट होती हैं। There is increase in vagal effect, जिसकी वजह से ब्रेडिकार्डिया होता है और PR इंटरवल जो है वो प्रोलॉन्ग होना शुरू हो जाता है। डायजॉक्सिन जो है वो क्रोनोट्रॉपी को रिड्यूस कर देती है, यानी हार्ट काउंट को रिड्यूस कर रही है, और आइनोट्रॉपी यानी कि स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज कर रही होती है। यहाँ पे पर्टिकुलरली अगर हम एट्रोपिन का इफेक्ट याद करें तो एट्रोपिन एक शॉर्ट इनिशियल ब्रेडिकार्डिया के बाद टेकिकार्डिया करेगी और PR interval जो indicate कर रहा है ब्रेडिकार्डिया को, that will be reversed. So the answer is that whenever digoxin is given alongside atropine, then atropine will reverse the heart rate और जो increased PR interval है जो ब्रेडिकार्डिया को show कर रहा है वो reduce हो जाएगा. Let's move on to our final statement of the day. That is, in a patient receiving digoxin for congestive heart failure, conditions that may facilitate the appearance of toxicity include A. Hyperkalemia, B. Hyponatremia, C. Hypocalcemia, D. Hypomagnesemia and E. Hypophosphatemia. यहाँ पे हमें ढेर सारे आयन्स दिए हुए हैं और हमें अगर एग्जैक्ट नॉलेज होगा कि कौन सा आयन डायजॉक्सिन टॉक्सिसिटी में किस तरीके से ऑल्टर हो रहा है तभी हम इसको सॉल्व कर पाएंगे. Now the examiner's trick is that they have reversed the ionic changes which can lead to digoxin toxicity. So first up we have hyperkalemia, but hypokalemia is the one thing which results in increased digoxin binding and increase its therapeutic and toxic effects. Then instead of hyponatremia, hypernatremia is the one which causes more digoxin toxicity, so ये option भी निकल गया. Hypocalcemia की जगह hypercalcemia के अंदर क्या होता है कि digoxin is already enhancing calcium reabsorption into cardiac myocytes, so it is increasing inotropy. अगर हम मज़ीद कैल्शियम देते हैं तो तभी जाके डायजॉक्सिन टॉक्सिसिटी होगी जो कि हाइपोकैल्सीमिया के साथ इतनी रेलेवेंट नहीं है. Then there is hypomagnesemia. Now hypomagnesemia can sensitize the heart to digitalis induced arrhythmias. So hypomagnesemia is the one option which is correlating with the ionic changes. Rest, I repeat that instead of hyperkalemia, hypokalemia is more dangerous. Then there should be hypernatremia and hypercalcemia. तो ये पॉइंट ऐसे हैं जो थोड़ा सा आपको याद करने पड़ेंगे और आपको बहुत प्रेजेंस ऑफ माइंड अपनी रखनी पड़ेगी इस पर्टिकुलर तरीके के सवाल को सॉल्व करने के लिए. सो द करेक्ट आंसर टू दिस MCQ is hypomagnesemia, and here we end our today's session. Hope you liked it. Stay tuned for more high yield MCQs and don't forget to subscribe our YouTube channel.